about the primary health care or PHCs. We will mainly focus on the definition and the level of the care, and after that, the core activities and what are the principles for the tonic PHCs. So, the definition is it's a universally acceptable definition that primary health care is an essential health care which is made universally accessible to the individual and families in the community by mean of acceptable to them. अब आइदर बात जो है वो जो कम्युनिटी के लोग हैं और जो फैमिलीज़ हैं उनकी ये फुल पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है एंड एट लीस्ट कॉस्ट जो है वो फॉर द कम्युनिटी और जो कंट्री के लिए जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं. सो लेवल ऑफ केयर जो है वो तीन किस्म के हैं. एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शरी. प्राइमरी मेनली फोकस कर रहा होता है प्रिवेंशन पे. सो ये फर्स्ट लेवल है जहाँ पे आप एक बंदा या इंडिविजुअल जो है वो हेल्थ केयर के साथ कांटेक्ट में आता है. और ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, पीएचसीज हैं, वो आपके जो एसेंशियल हेल्थ केयर हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. और मेजॉरिटी ऑफ द प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे सेटिस्फैक्टरली मैनेज हो सकते हैं. और ये लोग के जो है एक्सेस में हो जाते हैं. मतलब आपके गांव में, आपके देहात में ये चीज़ जो है वो हॉस्पिटल होता है, बीएचयू जिसको आप कहते हैं, इसको आपके लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता और ये आपके जो है वो क्लोजेस्ट टू द पीपल. प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. जो बीएचयू होते हैं वो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सेकेंडरी में जो है वो आपका केरोटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. वहाँ पे प्रिवेंशन ऐसा नहीं होता और ये उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जिसको आप डीएचक्यू कहते हैं. ये फर्स्ट रेफरल यहाँ से होती है जो टीएचक्यू के लिए की जाती हैं. बीएचयू या प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है वो रेफरल सिस्टम नहीं होता. और टर्शरी केयर हेल्थ जो है वो उसमें आप क्या जाते हैं जहाँ पे सुपर स्पेशलिटीज़ लाइक जो कार्डिक सर्जरीज है, न्यूरो सर्जरीज है, जो एमआरआई में या जो रेडियोलॉजी में सर्टन एडवांस प्रोसीजर्स हैं वो वहाँ पे हो जाती हैं. और ये प्रोवाइड करो तो जो रीजनल या सेंट्रल लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन के जो टीएच क्यूज होते हैं, जिस तरह लाइक हमारे यहाँ एलआरएच है, एमएमसी है, ये हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड कर होते हैं. ये टीएच क्यू में जो है वो आपके जो टीमोज हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है. कोर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है फॉर दी पीएचसीज. उसमें आपके आ जाती हैं 10. बाज़ लोग ऐड कहते हैं बट यहाँ पे मैंने 10 मेंशन की हुई है. फर्स्ट है एजुकेशन. एजुकेशन में आपके कंसर्न प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनको आपको एजुकेट करना होता है. और सर्टेन डिजीज़ या जो कंसिक्वेंसेस है, जो आउटकम्स है, उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एजुकेशन, वो लोग एजुकेट प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं. दूसरा ये कि प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर द मैटरनल एंड चाइल्ड, और जो कम्युनिटी के हैं उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन को जो है प्रमोट करना होता है. उनको सप्लाई नहीं करना होता बट उनको ये कहना है आपने प्रॉपर डाइट लेना है कि इन कंडीशन में कौन कौन से डाइट्स आपने लेने हैं, कि कौन कौन से अवॉइड करने हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन. एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. यहाँ पे एक एमओ होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रॉपर वाटर सैनिटेशन, जो बेसिक सैनिटेशन एंड वाटर, जो सेफ वाटर सप्लाई है, वो उसमें आपका मेन रोल है. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो, या जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं उनमें, उनकी कौन कौन से केयर जो है रिक्वायर्ड होती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जो केयर रिक्वायर्ड होती है वो भी आपको पीएचसीज में मिल जाते हैं. इम्यूनाइजेशंस अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो भी प्रोवाइड करते हैं, और या सर्टेन कंडीशन में वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपकी एक्सपोजर होती है. तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लोकल एंडेमिक डिजीज़, वो भी प्रोवाइड कर रही होती हैं. अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक इलाकों में कोई सर्टेन डिजीज़ जो है वो नॉर्मल प्रेजेंट है, उनके लिए भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को प्रोवाइड कर होती है. बाज़ ये जो है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एपिडेमिक्स आ जाती हैं एक लोकल सर्टेन इलाके में या लोकेशन में, तो उन लोकेलिटीज़ में जो है वो उस एपिडेमिक्स को कंट्रोल एंड प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू पीएचसीज. Appropriate treatment of the common disease and injuries, basic laboratory centers पर जो सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड कर होती हैं. इन द प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स वो भी प्रोवाइड कर सकती हैं.
प्रिसिशन मेडिसिन क्या है इज डिफाइंड बाय द WHO। उनमें वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। They should be therefore to available at all the time in the adequate amount of जो appropriate doses है the price of the जो affordable हो for the community, तो उसको आपके essential medicine आ जाती हैं। ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ गाइड जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स या हेल्थ असिस्टेंट उनको भी जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड रेफरल सिस्टम आल्सो इज द पार्ट ऑफ दिस PHCs। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द सोन PHC उसमें आपके ए आ जाती हैं 3 C's। उसमें द एड ए कंसिस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस, अवेलेबिलिटी, एडिक्वेसी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, accessibility और जो accountability, and 3 C's are the completeness, comprehensiveness and the continuity। अरे को define करते appropriateness, whether this service is needed at all in the relation to the essential human needs, priorities क्या है, policies क्या है for the for the drugs for the needs of the humans। Adequacy ये है कि the service proportionate to the requirement, either is it enough or not। Affordability is all about the cost of the individuals and for the community, for the country। Accessibility, I'm accessible to those drugs, those facilities or not। अगर वो रात का टाइम मुझे एक्सेस नहीं है, दिन के टाइम मुझे एक्सेस नहीं है, so it should be 24/7, it should be reachable। The accessibility depend on the very variety of the factors जिसमें आपके communication satisfactory between the healthcare providers and the patients। We can see the acceptability during polio vaccination campaign, either they accept or not। And availability means that the care can be obtained whenever the people need it, 24/7 जिसमें हम कहते हैं ना। Accessibility means that the medical care can be readily evaluated, either this is these um, uh, treatments or drugs or maneuvers you have required for that particular patient or not, जिनमें किन को रिक्वायर्ड है, किन की अर्जेंट है, किन की इमरजेंसी है, किन की जो है वो electives हैं। अकाउंटेबिलिटी जो फाइनेंशियल की हम बात करते हैं, फिजिबिलिटी फॉर रेगुलर रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड बाय एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ना कि हर एक बंदा आ जाते हैं और आपसे अकाउंटेबिलिटी का जो है वो कर देते हैं। यू आर अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक अकाउंटेंट्स, नॉट फॉर एवरीवन। Completeness mean the adequate attention to all the aspects of the medical problem। और फॉर एग्जांपल बास कंडीशन में तो ये होता है ना कि अगर वहाँ पे इमरजेंसी आ जाती है, एपिडेमिक्स आ जाती हैं लोकली, तो वो आपने ज़्यादा फोकस करना होता है रादर देन एक एंडेमिक्स डिजीज़ पे। बट ओवरऑल जो है वो अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर आपने हर एक्सपेक्ट को जो है वो देखना होता है। कंप्रहेंसिवनेस मीन्स दैट द केयर इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल टाइप द हेल्थ प्रॉब्लम्स। And continuity means management of patient care over a time is coordinated among all the providers। Let's summarize in a nutshell. PHCs is an approach that focuses mainly on the person, not the diseases. Consider all the determinants of the health and address most important problems in the community by providing prevention, curatives, and rehabilitative services। This was all about the PHCs. If you have any question, you can ask me in the comment. Thank you so much.